Sure, ma'am. Sure, ma'am. Ma'am, आपके साथ शेयर में शेयर करना है आपका email ID So, hi everyone, I hope the voice is coming to all, right? Thank you, ma'am. We will do. So, ma'am, I tried downloading the rest data from Goan portal, ma'am. Actually, the thing is that even if I'm Just a minute. attending the class, Live, right? I Okay. have to. I'm a little slow learner with respect to GIS, so Just a minute. Just a how minute. I Okay. now self study again, and then itself I could able to understand. Like, uh, Done. Okay. So, hi everyone. Good evening and welcome to Study IQ. जो MCQ sessions जोटा आमे link please share this session with others so that rest people will be benefited through this. Okay. Is it fine to all? Good evening. So, आज जो सेशन रही है प्रेशर बेल्ट उपर देखा राइट होप दिवांशु इज इट क्लीयर टू ऑल देव ऑल मतलब द वॉइस इज क्लीयर फाइन एनफ टू ऑल क्लीयर ओके फाइन तो फास्ट अफ ऑल आज आम देखा प्रेशर बेल्ट जो प्रेशर बेल्ट को लेकिन तुम जहाँ भी क्वेश्चंस अच्छी मुझे डिस्कस करने ट्राए करी एंड जहाँ भी रही आमर कह जो एमसीक्यू रही एमसीक्यू डिस्कस करिया प्रेशर बेल्ट रे बट ता पूर्व गोटे क्विक रिविजन आम करवा आज यूजुआल जमी 1 आवर सेशन चलो कहले 7 ରୁ 8टा 1 आवर सेशन चलो विदिन दिस 1 आवर ऑफ सेशन what we need to do is that first of all I will go through this, right? I will go through it. मत जीवा पड़ो फास्ट मुझे देखी कि प्रेशर बेल्ट को प्रेशर बेल्ट रही एंड हाउ द प्रेशर बेल्ट डू फॉर्म and what would be the significance of the pressure belt or significance कौन रहिबो ये सब डिस्कस कला पर then we will move to the MCQ part को आसबा MCQ समस्त जानछन in the second half of the session that means after the 30 minutes usually the session is what 60 minutes of the session रहते that means 1 hour session वो नहीं था after 30 minutes we will back to the so चलो फिर pressure belt देखिबा so these are the some pressure belt the first of all मु pressure belt से तो टिके acquainted कर दे तमन को then मु तार definition को आसीबी तार formation को आसीबी and जिते संभव मु कहबी ए जो OPSC the changes happening in the OPSC right जो changes आसुची good evening संजीव देव देवांशु समस्त को शेयर कर दे सेशन को जो ग्रुप रे अच्छा तुम माने so that rest people will get benefit and they would be also aware yes the session is been resumed okay now first जदि मु कहबी कि what are the things that we need to remember while going through the pressure belt जेतरा में pressure belt कथा पढुछे and this times जदि मु कहबी in the mains geography optional they asked questions planetary winds what planetary winds कथा से मने पचारथिले तो these are the pressure belts तो जितना मैं pressure belt कथा कहूँ I means belt means what is a extensive area it's that is an what extensive area so when we talk about the pressure belt right is an extensive area ये गोटे बहुत ही बड़ा तो pressure belts means we are talking about atmospheric pressure belt we are talking about what atmospheric pressure ना आगे pressure जानले ही pressure belt कथा में आसीबा right तो atmospheric pressure obviously आम जिते कहूँ atmospheric pressure that means we do talk about on the concentration of air in that particular area गोटे एरिया रे केते एयर अछि जदि एयर concentration अधिक अछि then it would be high pressure and if the concentration of air is low then it's suddenly going to be the low pressure तो ये जो देखो हमें लो प्रेशर हाई प्रेशर
तो ये पोलर हाई प्रेशर कथा नहीं जाओ, सब पोलर लो प्रेशर कथा नहीं जाओ, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कथा नहीं जाओ. सो दीज आर द प्रेशर बेल्ट आम पाखे रही. दैट मीन्स दिस इज व्हाट लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर. एटा आम देखुचे व्हाट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. दिस वन इज पोलर हाई प्रेशर and this one is subtropical high pressure. एगुड़ा जदि तमन तो पढ़ी थो कहीं ना कोठी पढ़ी थो, इधर के यूट्यूब रे पढ़ी थो के क्लासेस रे पढ़ी थो कोठी ना कोठी डेफिनेटली तमने पढ़ी थो राइट. तो ये मु अंडरलाइन कर दूची सो दैट तमने को विजिबिलिटी टिके ही परिबो सर्कल कर देले. सो दीज आर व्हाट प्रेशर बेल्ट राइट. ये सब होची हमर कोन प्रेशर बेल्ट कथा हम को एंड फाइनली इट वुड बी हाई प्रेशर. सो दीज जोटा मु सर्कल कर देची देखो दीज आर द प्रेशर बेल्ट. ताले प्रेशर बेल्ट जिते कहते इज एन एक्सटेंसिव एरिया आम कह एटमोस्फेरिक प्रेशर जोगु ये बेल्ट सब फॉर्मेशन होची. ताले एटमोस्फेरिक प्रेशर इधर गोटे लो प्रेशर हो पारे अदरवाइज गोटे हाई प्रेशर हो पारे एटमोस्फेरिकली कहबी. एंड एटमोस्फेरिक जो लो प्रेशर हाई प्रेशर that is based on concentration of air, that is what based on the concentration of air mass. That means certainly mu kahibi it would be what air mass, it would certainly going to be the air mass कि केते air mass होची सेई जदि गोटे जगह रे air concentration जदि मु कहिबी बा air mass अधिक अछि air कोनोसी जगह रे ताको हम कहबा इट्स ए हाई प्रेशर. जदि कोठी जगह रे लो air अछि air concentration जदि कम अछि then we will call it a low pressure belt. फॉर एग्जांपल जमती मु क्लासेस रे बुझाए कि गोटे बड़ भाव 15 लिटिया गैस टैंकी अछि तम पाखरे से बहुत सारा गैस अच्छी आ गोटे छोट गैस टैंकी आम नहीं जाइए 5 लिटरिया तो ये गैस ना सो दैट प्रेशर विल डेभलप कि प्रेशर ग्रेडिएंट फ्रॉम द 15 लिटिया जो गैस टैंकी अच्छी से जेहेतु अधिक प्रेशर अधिक गैस अच्छी इन द प्रेशर दैट विल कम्स टू द 5 लिटर जो गैस टैंकी अच्छी से आसूँ बिकज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिकज ऑफ द व्हाट प्रेशर डिफरेंस बिकज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस डिफरेंस आम कहीपर एंड द ग्रेडिएंट डेभलप्ड एंड ड्यू टू दैट ग्रेडिएंट देयर वुड बी ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस फ्रॉम द बिग टैंकी बड़टारे जोटा अधिक अच्छी गैस टू द कम को आसूँ. So I mean the atmospheric pressure also like that. The reason where the concentration of the air mass is more that will have the high pressure, and the reason where the atmospheric concentration is low air concentration that will have the low pressure. Certainly this is what in the layman terms हम जति कहि परिबा. But as it is related to the temperature of that region सेति पई पिला माने कहंती भाई केहि भी कहिथिबे समस्त सुनिथिबो कोन से टीचर भी कहिथिबे कि high the pressure that means high the temperature low the pressure, low the temperature high the pressure. This is relation between temperature and the pressure. तो यदि temperature and pressure relation को मु बाहर करिबी मतलब आमे यदि कहबा त यदि temperature let's say for examples मु कहिबी temperature यदि high अछि ताले pressure कोन हिजो what would be the pressure would be low हिजो. And जदि temperature जदि हम कहबा for example temperature जदि low अछि then suddenly pressure is going to be high. This is the relation between हम कहबा temperature and pressure भितर relation. But temperature and pressure भितर relation तो हमको सारे एमती कहीं कही था. Good evening दीप्ति, पीहू, संजीव. So this is what generally relation जैसे मु कही था कि temperature and pressure भितर जो relation हम देखिबा this is the relation. तुमको सारे एमती कहीं की था मु तमन को मध्य बेसिक क्लासेस रे कहितली ए जेतरे मु तमन को क्लासेस करितली बेसिक क्लासेस एंड बहुत सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल देखिबो जो माने जीएस क्लास करछंती मोरो स्टडी इक्यू प्लेटफॉर्म रे बेसिक से माने इजीली सेक्शन 1 रे जेति की क्वेश्चन आसीथला तम माने कर दे परिबो. ए दीप्ति कथा नै छ दिबांशु कथा नै छ ये माने समस्त आराम से कर परिबो. आफरीन कथा नै छ जो मन को मतलब नाम एक्वेंटेड हो जाइए क्लासेस कही कही कि बाकी मैंने भी अच्छा एमती ना कि मैंने अच्छा जो मैंने डेली क्लासेस कर आई बिलीव कि मैंने सेक्शन ज्योग्राफी ऑप्शनल जोटा काली स्टार्ट हो तुम मन साइज जानी एंड फाइनली ज्योग्राफी ऑप्शनल तुम मन काली स्टार्ट करुँची लाइव क्लासेस स्टार्ट हो मोर देन 250 आवर्स देवी मु एंड जीएस तुम मन को ऑलरेडी पढ़े रखी तुम मन को काफी इजी हे बुझे ऑप्शनल्स राइट. तो जहाँ भी हो तो प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन मु तुम मन को देखेली कि दिस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशंस. आई मीन्स जिते कौन सी जगह टेम्परेचर अधिक हो जाए द एयर विल बी लाइट एंड इट विल मूव ऑफ. द एयर विल बी लाइट एंड इट विल मूव ऑफ. ता द्वारा कौन हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ एयर विल रिड्यूस. एयर कंसंट्रेशन कमी एंड इट वुड बी लो प्रेशर. बट जब कौन सी जगह कोल्ड मीन्स व्हाट दैट विल बी डेंसिटी विल इंक्रीज देयर वुड बी हेवीनेस ऑफ द एयर. आई मीन्स व्हाट इट वुड बी डिसेंट. तो डिसेंट जोटा बिकॉज सेटल डाउन है दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी. सो आई वुड से बेटर टू से व्हाट इफ टेम्परेचर इज लो दैट मीन्स स्टेबिलिटी विल बी देयर. देयर वुड बी व्हाट एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी.
there would be what? Atmospheric stability. And if temperature is high, there would be atmospheric instability will be there. There would be what? Atmospheric instability, and that is the difference. So if it is instability, that means instability means what? The air is ascending off. The air is what? Ascending off. When I say atmospheric stability, that means the air is descending. The air is what? Descending, stable, calm condition will prevail, and the cool condition may prevails. Right? So this is how the relations कहिबी कि pressure and temperature relation जते मु कहिबी. So likewise, let's go through कि आमे एबे देखिबा हमर जो pressure belt सब रहिछि सेमान को मु टिके कहिथि. ते माने को pressure belts केमती formation हेइ थाए. And basically the formation of pressure belts जते मु कहिबी, basically आमे कहिबा कि जो formation of pressure belt हेइ थाए, the formation of pressure belt जते आमे discuss करिबा, right, the formation of pressure belt जदि मु कहबी जनरली हमरो pressure belt दीटा कारण जोगु formation हेइ थाए. pressure belt रो जदि formation केही तुमको पचारे कि pressure belt केमिति formation हेइ थाए, right, pressure belt रो formation साधारणतः दीटा factor रो हेइ थाए. गोटे कोन हेइ थाए, गोटे थाए thermally, गोटे कोन थाए तमरो जाको मु कोन कोए thermally induced. Either it would be thermally induced हेइ जिवो, or it would be dynamically induced, or it would be dynamically induced. So suddenly pressure belt जो formation हेइता है, that would be two types of formation हेइता है. Either it would be thermally induced हेबो, or that would be the dynamically induced pressure belt. तो साधारणतः pressure belt रो formation जेतले हम कहूछे two types of formation हेइता. When I say dynamically induced pressure belt, I means the pressure belt is being formed due to the rotational factors, due to the what tricellular models जो होची atmospheric circulation जाको में जैसे what हमें जाको कहूचे what primordial circulation जाको मु कहूची primordial circulation, because of the primordial circulation of the atmosphere that leads to the establishment of the मतलब different type of a pressure belt on the surface of the earth हम कहूचे, which we called it in other words the tricellular models जाको तमे कहूचे Hadley cell, Ferrel cell, Polar cell तम मने मध्य जानी थिबो. And these are, if due to the rotation and the descending of air mass leads to the formation of the pressure belt, we will suddenly call it dynamically induced pressure belt. And these dynamically induced pressure belts are who? This one, this one, this one, and this ones. So I means subpolar low pressure, subtropical high pressure, this southern hemisphere as well. So these 2 and 2, 4, there are total 7 what atmosphere, these are pressure belts are there. Out of 7 pressure belts, the 4 are formed due to the dynamically induced, due to the rotational impacts, the effect of what I will not say impact, effect of earth that leads to the predictions, that leads to the establishment of pressure belt, which is we do call it what dynamically induced pressure belt. I means if the earth were just imagine if the earth were stationary, this pressure belt may not have formed, but due to the dynamic nature of earth rotates, right, revolve करूची, rotate करूची, but rotations मध्ये होची नीचे axis चारिपटे, that's why these pressure belts comes to exist. But apart from that, if I comes to the, I will use the red, this one, and this one. So जो red mark mu करूची, these three they formed dynamically induced, sorry, thermally induced. They are what? Thermally. That means the red color that I have taken, this is for the thermally induced pressure belt. So 4 pressure belts, they are dynamically induced and the 3 are thermally induced. ये कथा समझते तमने क्लासेस रे पढ़ाई छी बहुत बढ़िया से, है ना, बहुत बढ़िया से. गुड इवनिंग सस्मिता, तुम गोटे पढ़ाई थिला एंड राइट इटा सब तुम को ऑलरेडी पढ़ा जाइए. तेणुक थर्माली इंड्यूस्ड, I means thermally induced pressure belt meaning kono. When I say thermally induced pressure belt, I mean temperature is the factor for the formation of what? Pressure belt. I means what? Temperature is the factor for the formation of pressure belt. What mu kahili? Temperature as the factors, like this one. Here it is what? Cold kind of climate, but due to the what? Cold kind of climate, the pressure forms that would be the high pressures. And here also suddenly when I comes to the what? Equator, मतलब अच्छा मु कोठी रेड टा भूल बुले देछि कि सर्कल, अच्छा अच्छा एक मिनट रहो, ये रेड टा मुट के एठी भूल बुले देछि, मतलब करेक्ट कर दिया यार,
बेटा इक्वेटर हम ना इक्वेटर तो दैट मीन्स इक्वेटर एंड दीटा पोलार जो रहा इक्वेटोरियल लो प्रेशर इज व्हाट थर्मली इंड्यूस्ड ताले थर्मली इंड्यूस्ड के इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड बोथ पोलार आम कहीपर एंड बोथ पोलार हाई प्रेशर ताले ये जो तीन टा हूँ तुम एमाने होचंदी कौन थर्मली इंड्यूस्ड बाकी ये जो सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर रहा ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ए डायनामिकली इंड्यूस्ड ए दीटा डायनामिकली इंड्यूस्ड ये कथा तुमने जानिछ ताले थर्मली इंड्यूस्ड मीनिंग कौन temperature is the factor for the formation of the pressure belt. So this is how the formation of pressure belt I have done it. एबे रहा गोटे गोटे प्रेशर बेल्ट लोकेशन एंड सेमानकर सिग्निफिकेंस कौन ताले ये जो प्रेशर बेल्ट सब रही ये प्रेशर बेल्ट सब जी मुझे कहि दीज आर द प्रेशर बेल्ट जो प्रेशर बेल्ट तुमको देखा मिलूँ दिस प्रेशर बेल्ट प्लेज बट प्ले वेरी इंपोर्टेंट रोल्स इन द शेपिंग ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट्स विंड पैटर्न कथा नहीं जाओ precipitations कथा ना जाओ फॉर्म ऑफ precipitations एरिया precipitations सोशो इकोनॉमिक लाइफ को केमती इंपैक्ट करूची इकोनॉमिक को केमती हमें कह परछ तो डिफरेंट हमें कह फ्लोरा फॉना एवरीथिंग विल बी इंपैक्टेड ता द्वारा राइट ता द्वारा सब जिनस इंपैक्टेड होची डेफिनेटली इंपैक्टेड होची ये कथा तुम माने मथे जानिछ जा भी चलो फिर गोटे गोटे हम देखिबा तो मतलब प्रेशर हमें बेल्ट देखले सो प्रेशर बेल्ट्स आर दैट मींस द लैटिट्यूड्स हमें कहिबा zones of uniform atmospheric pressure forms due to the what uneven heatings of earth and rotation कथा मु तुमको कहि फोर मेजर प्रेशर बेल्ट जोटा हमें इक्वेटोरियल लो प्रेशर कथा कहबी इक्वेटोरियल लो प्रेशर को हमें डोल्ड्रम मध्ये कहि थो आउ ताकू कोन कहि डोल्ड्रम्स मध्ये कहा जाए बिकॉज इक्वेटोरियल लो प्रेशर इज अबाउट थर्मली इंड्यूस्ड तो प्रथम कथा ये होची थर्मली इंड्यूस्ड हमें कहबा गोटे लो प्रेशर and this thermally induced low pressure जोटा में कोचे जाको मु कोचे doldrum this is what called as the doldrum आको कोन कहा जाए doldrum बोली कहा जाए the intense heatings air rises of creates the low pressure तादर कौन से that will creates low pressure the region of calm wind that will have the calm wind पूरा calm रहिबो heavy convectional rainfalls will be there and प्रत्येक दिन तुमको वर्षा हबो obviously can equatorial type of climate जदी अछि we will have बट डेली आमको तुमको कन्वेक्शनल रेनफॉल देखा जार जहाँ डाउट अच्छी तुमने पचार डेफिनेटली राइट एंड दिस रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ITCZ एंड ITCZ itself what meeting of the two trade winds that means it's suddenly the ITCZ is the meeting of two trade winds and that meeting of two trade winds itself meeting kahin habo low pressure otherwise the meeting haboni if there would be no low pressure how the two air mass will definitely meet so they would not meet unless and until there is a low pressure so that's why the ITC wherever the wind meets that ought to be the low pressure if the wind diverges that ought to be the high pressure that's the condition that's the nature is been like that otherwise it would not be able to possibles right hope you are getting me so I means so ITCZ 0 to 5 north 0 to 5 south this is what doldrum boli kaha it's a calm zone and as this region does not have Coriolis force because of the what no Coriolis force in the equator hence the cyclones does not form here in the equator otherwise the cyclone would have formed in these particular zones because of the what the rest of the condition is proper and the fine in this region but only the factor is that there is no Coriolis force hence the what cyclone is not turning up to this region से हमें कहि परिबा जा भी UPSC angles रे तो माने जान परबो ITCZ को नहीं पचबो then we will comes to suddenly and this region ये जो तुमको देखाउ छै ना equatorial low pressure this equatorial low pressure belt you will have daily rainfall को प्रकार convectional rainfall और जदी जदी गोटे जगह रे daily rainfall होची high temperature high humidity and suddenly it will leads to कोन को नहीं जबो it would be evergreen loss evergreen हमको कोन देखा जो forest will be there it will have loss evergreen forest हमको देखा जो in this particular region hint so this will be there subtropical high pressure then suddenly we will comes to the subtropical high pressure को आसीबा now let me comes to the subtropical high pressure तो subtropical high pressure को एबे आसीबा राइट तो subtropical high pressure जति मु कहिबी ये जो subtropical high pressure belt descending air mass hardly cell रहिछि एटा कोन रहिछि हमर hardly cell रहिछि here is what hardly cells हम कहि परिबा air that air जति हम कहि परिबा that is air mass जोटा कि adiabatically हम कहि परिबा high pressures रहिछि एटा तम कहि परिबा कि there is high pressures हम कहि परिबा what of subpolar low pressure belt also there तर ये जो हाई प्रेशर बेल्ट कहीं की रोची दिस इज आम कहबा ये हाई प्रेशर बेल्ट कहीं की होची इट्स अ डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर इट्स अ व्हाट डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर ये जो हाई प्रेशर होची ये होची डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर रहते समझते जानता
dry stable conditions. So here would be what I'm कहवा dry and stable condition तुमको दिखा जो कि high pressure मतलब stable, atmospheric stability will be there. Sahara, Kalahari, so desert रही obviously हमें जो दिखा atmospheric stability would not lead to the what yielding of rainfall. जदि कौन सी जगह रे atmospheric stability अच्छी ना तादरा तुमको rainfall हबो नहीं. There would be no rainfall. That's the problem. Clear everyone? Right, Jabio. Now we will comes to the subpolar. But one thing here you have to remember that this subtropical high pressure is the origin of the trade winds. The origin of trade winds and westerlies both will be there. आउ मु तुमको बारंबार कहूँ जो मैंने कंटिन्यूअसली आमको प्लेटफॉर्म रे फॉलो कर जो मैंने आमर बेसिक बैचेस मानक अच्छो जार जो भी मतलब रिगार्डिंग द कोर्सेस कथा नहीं चो रिगार्डिंग स्टडी कथा नहीं रिगार्डिंग प्रिपरेशन कथा नहीं चो यू कैन ऑलवेज मोस्ट वेलकम्स रीच आउट टू मी ओपनली कहूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म रे भी कहूँ because the nature of changing of the exam OPSC exam is so dynamic, is now changing very fast. And in this scenario you need to have the what mentor तुमको mentor दरकार है, need to have the guidance, right, so that you can sail smoothly. And that anxiety के भी obviously preparation रे anxiety also one of the part, and we need to tame it. Jab you. So these are the there. Here would be descendings of the air mass will descend here air mass will ascend because of the temperature as a factors. Now we will comes to the subpolar low pressure. The subpolar low pressure is again it would be what dynamically induced low pressure because of the what meeting of the two air masses. It would be polar high so that westerlies which is coming from the subtropical sorry, and easterly cold air mass which is coming from the polar region. Meeting of two air masses, two different air masses, that leads to the formation of the front, and front there जो हमारा कौन है inversion will forms inversions condition the what there would be air mass inversion will happens, and in these regions a region रे हमें कहिबा what will happens in these regions हमें कहिबा that would be the low pressure forms जहाँ का में temperate cyclones मध्य होची ए region रे कौन temperate cyclone ही थे polar low pressure temperate cyclones, right. This region is famous for the front, famous for the temperate cyclones. The polar high pressure is again it would be thermally induced high pressure atmospheric stability, but you will have polar vortex ही था right in this region. Now we will have MCQ session. Now comes to the MCQ session on the fast MCQ on the screen. Right, sound नहीं sound ठीक ठाक थी, I think it's proper होची, I think it's proper, right. चलो फिर okay. Now comes to the questions. Question को आसीबा से कुछ equatorial low pressure belt is mainly formed due to what? Equatorial low pressure belt. Equatorial low pressure belt. हाँ चलो फिर तो आंसर दियो समस्त देखा से कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑफ अर्थ रोटेशन सेठी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा जो मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस intense insulation causing the convergence कौची से convergence कथा कौची by convection sorry convections Coriolis force deflects the winds कथा से कौची the convergence of trade winds तो equatorial low pressure रे कौन देखा जीवो तुमको answer देखिए answer Dipti is going for C only 2 right and Dibangsu is going for C बाकी मैंने देखिए
बाकी मैंने देखा Pihu is going for C, Sachidananda going for C, Sasmitha is going for D. Okay. चलो देखिए ताले ना प्रथम कथा हूँ देख अर्थ आम गोटे गोटे स्टेटमेंट को देखा तो फास्ट ऑफ ऑल जदि मु कहबी कि चलो फिर हम देखा राइट मु देखिले ऑप्शन ना से देखा प्रथम से होची कोरियलिस फोर्स ना प्रथम कथा आम जाने कोरियलिस फोर्स ये बहुत ही मतलब नो कोरियलिस फोर्स देयर इज व्हाट नो कोरियलिस फोर्स सो 3 got cancel now this is convection intense this one is correct 2 is correct if 2 is correct 2 is here 2 is here 2 is here okay 1 now earth rotation रे से कहूची एठी होची the centrifugal force of the earth rotations ना so this is not there would be centripetal force आमे देखा जिवो हां जदि आमे कहबा अर्थ रो रोटेशन बा स्पीड जेतल रहउची से ऑब्वियसली बाहर को जीवा पई चाहिबो बट ये आसे तो हमर किछि नवतव नहीं वी डोंट हैव बट आमको ये किसी नवतव नहीं तेणु सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ से कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ रोटेशंस रे आमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सडनली दिया जाओ बट सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ बहुत ही स्ट्रांग से तो आम सब अर्थ सरफेस अच्छू जी अर्थ सरफेस रे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही ज्यादा होता तो आम भी तो सरफेस रे न था ना तो कोठी ना कोठी जदि क्रिटिकली आम भाविबा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन लेट से अर्थ रो सरफेस रे आम अच्छू वी आर द ह्यूमन बीइंग अच्छू जदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होता तो आम भी तो उड़ी बाहर को पड़े था ना तो कोठी ना कोठी सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक बा ग्रेविटी अधिक सो से आम कह सेंट्रीपिटल फोर्स जेहेतु सरफेस रे सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक से तो आम रहीचु ना सरफेस रे नले आम सरफेस रे अटैच होकी केमती रही था रही पारिबनु तो 1 गॉट कैंसल तो 1 गॉट कैंसल कले ये कैंसल हो गला ये कैंसल हो गला तो रहिला मो पाखरे आ दीटा ऑप्शन ताले 4 कोन कहूची कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड एटा ठीक ठीक अछि ताले एटा ठीक ताले बी इज द करेक्ट आंसर दैट मींस व्हाट बी विल बी द करेक्ट आंसर तो बी विल बी करेक्ट आंसर राइट बिकॉज़ तमे जांचे दीटा नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड दे विल कन्वर्ट्स now comes to the 2 number questions question number 2 देखिबा तमन को कमेंट कोन रहिछि शिखा is going for 2 मतलब 2 and 4 बहुत बढ़िया चलो next the next question next consider the following statements regarding the Hawk's latitude. They are associated with the descendings of air from the Hadley cell. They are regions of maximum precipitations. Most of the world's hot desert lies close to this latitude. Chalo. Both easy questions roichi. Questions number 2 and the questions is very easy. You can easily do it. बहुत बढ़िया से करि परिबो जस्ट यू हैव टू लिटिल बिट ऑफ दिमाग लगेले आराम से ही जो दिया आंसर दिया 2A कहूची कि दीप्ति कहूची A हाँ बाकी बनी दियो 1 and 3 कहूची पिहू A इट्स ओके देखिबा ताले आंसर दियो फटाफट आंसर दियो तो माने ताले मु डिस्कस करछि तो माने आंसर दियो प्रथम कथा से कहूची एयर डिसेंट हियर्स तो या तो डिसेंट करियो पुनी से कहूची हार्डले सेल हमर तीनटा सेल अछि हार्डले सेल फेरल सेल एंड पोलर सेल्स दैट मींस सेठी तमरो फेरल सेल भी रहिछि एंड पोलर भी रहिछि तो सर्टेनली इट्स करेक्ट रहिछि एटा मध्ये ठीक अछि तमे जदी देखियो कि जो तीनटा सेल रहिछि तमरो this cells and this cell ये तीनटा जो रही so this one is correct then से कुछ heavy precipitation ना एटी precipitation हुए नहीं एटी least precipitation हुए एटा पूरा उल्टा कर दियो maximum precipitation कहीं के बके ना एटा तो high pressure और जेटा high pressure हमें कुछ horse latitude means but high pressure if it is high pressure then atmospheric stability if it is atmospheric stability so that would not lead to the formation of the what precipitation हमको सेठी दिखा जिवो नहीं most of the world's hot desert lies close to this was correct से कालाहारी कथा नहीं जो सहारा कथा नहीं जो you take it मतलब ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कथा नहीं जो साउथ अफ्रीका कालाहारी we will have नामीबिया कथा नहीं जो आटाकमा कथा नहीं जो कैलिफोर्निया ड्राई लैंड्स कथा नहीं जो थार कथा नहीं जो these are also here so this is correct the 1 and 3
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत बढ़िया तो समस्त इजिली आंसर आपको दे पाल नाउ वी विल कम्स टू थर्ड subpolar low pressure belts are primarily created due to what subpolar low pressure हाँ subpolar low pressure belts are primarily created due to what 3C 3 नंबर C आसूची C आंसर दोची के पिहू दीप्ति सस्मिता शिखा दे आर गोइंग फॉर C कौन कहছে क्वेश्चन सफला लो प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू व्हाट ऑलरेडी मु डिस्कस करिथली सेशन रे जहा डिस्कस हेतला सेइथरे अछि ओके बाकी माने आंसर दियो ट्राई करो 3 नंबर सी ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर तो आम जाने कि वेस्टर्लीज एंड पोलार ईस्टर्ली तो वेस्टर्लीटा तुम वार्म थाए एंड बोथ द मीटिंग ऑफ व्हाट वार्म एंड कोल्ड एयर मास तुमने समस्ते जान कि मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास तो दीटा जो एयर मास रहा दैट मीन्स दिस वेस्टर्ली ये रहा तुम वार्म एंड दिस वुड बी कोल्ड तो ये जो वार्म एंड कोल्ड एयर मास बोथ दे विल मर्ज एंड बिकज ऑफ द मीटिंग आम कह से दीटार मीटिंग आम कौन दैट मीटिंग विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट कौन फॉर्मेशन हम फ्रंट फॉर्मेशन ये जो फ्रंट फॉर्मेशन होता है से फ्रंट फॉर्मेशन दैट इक्वल टू लो प्रेशर आम कह now which of the following best explains the seasonal shifting of pressure belt seasonal shifting of pressure belt fourth number question number 4 सेशन को शेयर करिवो समस्ते राइट सो दैट बाकी माने भी बेनिफिट्स पाइबे कारण गोटे गोटे क्वेश्चंस तुमको काफी हेल्प करिवो प्रीलिम्स रे मन रखि थाओ बिकॉज मो टॉपिक वाइज नहीं कि जाउछि ना सपोज आज मुनेली देन लोकल विंड्स ऊपर डिस्कस करबा में ग्लोबल विंड्स ऊपर आउ थने डिस्कस करबी तो ईच टॉपिक विल बी डिस्कस सो दैट विल हेल्प यू ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम्स द accumulations and the accumulations of everything every MCQs that will lead you from the front as well चलो 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 4 नंबर सी 4 नंबर बी कहूँ के पिहू इज गोइंग फॉर बी राइट राइट बी कहूँ के सस्मिता दीप्ति इज गोइंग फॉर सी शिखा इज गोइंग फॉर सी 4 नंबर कौन कहूँ 4 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सीजन शिफ्ट राइट शिफ्ट रही आमर हाँ दि आंसर दि शिफ्ट कहीं द वेरिएशन ऑफ द सन्स एंड डिस्टेंस कथा कहूँ अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कथा कहूँ सी देखा तो बहुत सी अच्छी सी किए दिवांशु कहूँ सी सो सी विल बी द आंसर आंसर कौन अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो ही तो हम ना द चेंज ऑफ सीजन कहीं कारण सन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साउदर्न हेमिस्फीयर सन रो मूवमेंट होची ना तो सन रो मूवमेंट हुई नहीं सन इज स्टेशनरी रिलेटिवली स्टेशनरी
देख दुनिया कौन सी जिनस स्टेशनरी नुह तो आम ताको स्टेशनरी कहीं को रिलेटिवली स्टेशनरी है ना एंड that means what that is the what precessions of equinox na बिल्कुल नुह apparent movement of the sun is the right answer kana ता द्वारा कौन है change of season जेंते कि sun when the sun would be in the southern hemisphere obviously in the northern hemisphere we will experience the winter that would be vice versa when sun will comes to the northern hemisphere we will now the summer will start coming right in the March month in the month of March we will have the equinox will be there and after the March 22 and 23rd there would be again the sun would be in the northern hemisphere up to September 20th of September there would be completely in the northern hemispheres and this 6 month we will receive high amount of insinuations resulting into monsoon as well jab you isu katha mein discuss karche which of the following best explain the seasonal shiftings of pressure belt so that means it would be the apparent movement of the sun so apparent movement of the sun is the right choice now comes to the fifth number चलो फिफ्थ नंबर करेक्ट एटा डाउट क्लियर एटा फोर नंबर समस्त रही 4 इज क्लियर टू ऑल 4 वाला क्वेश्चन समस्त रही एवरीवन इज इट क्लियर टू ऑल सेमती नहीं सब लिख क्वेश्चन नंबर तापर आंसर दब से कह प्रेशर बेल्ट दैट मीन 0 डिग्री होची एटा कोन दे 1 0 डिग्री होची पोलार हाई प्रेशर 30 डिग्री होची सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर 60 डिग्री होची 90 डिग्री होची इक्वेटोरियल लो प्रेशर बस तुमको देखियार अछि एटा बहुत इजी क्वेश्चंस 8 इजी क्वेश्चंस अब कोन हे पारे एटा कहीं डिस्कस करिबा राइट एटा कहीं डिस्कस करिबा ना 8 इजी क्वेश्चंस अब किछि हे परिबो ना मते लागुनी अब किछि हे परिबो सडनली दिस वन इज व्हाट ए 90 डिग्री आउ ये रहबो तमरो 0 डिग्री तो ये दीटा को कैंसिल कर दे उल्टे देछि से आउ कोन बाकी एटा तो ठीक अछि एटा तो ठीक अछि तो दैट मींस इट वुड बी करेक्ट आंसर चलो फिर 6 number questions question number 6 now come to question number 6 which of the following statement is are correct which of the following statement is are correct से कहिछि is are correct polar region experience low pressure due to intense heating से कहिछि polar region experience low pressure due to intense heating subtropical high pressure belts are dynamically formed equatorial low pressure belt is thermally induced आउ मु थर्मली डायनामिकली इंड्यूस्ड बारंबार डिस्कस करिछि तमन को सहित क्वेश्चंस नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 6 र बी कहूची दीप्ति कहूची बी 6b बाकी मैंने ट्राई करो देखिबा दिव्यांशु कहूची बी पिहू इज गोइंग फॉर ओनली 3 ओके बाकी मैंने ट्राई करो समस्त ट्राई करो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस रही ना आम तो डिस्कस करते स्टार्टिंग रू से मुझे टे ध्यान से देखो और जहाँ को मतलब बहुत ही डिटेल्स रे क्लासेस दरकार ना देन जॉइन आवर बेसिक कोर्सेस से भी चलची परिपूर्ण 2.0 चली परिपूर्ण बैच 2.0 सेठी जॉइन करो देखो पोलार रीजन रे लो प्रेशर केमती हबो पोलार रीजन तो हाई प्रेशर
पोलार रीजन रे इंटेंस हीटिंग कोड आसबो एठी तो कोल्ड इंटेंस कोल्ड आसीबो ना तो जदि वन गॉट कैंसल वन गॉट कैंसल वन गॉट कैंसल and 3 this one is equatorial low pressure is what thermally induced ठीक अछि एटा तो dynamically induced एता ठीक अछि जोटा मु तुमको कहली this is dynamically induced because of the rotational आउ टिके पूर्व एठी देखितले हबे बाबा descendants एठी descend करूची बोली लिखा हितला राइट ना कोठी गोटे descend थिला ना एठी राइट तो दैट वुड बी करेक्ट तो सेटा तमर करेक्ट रहबो कना एठी descend होची कोठी because जो हमरो Hadley cell ru air mass descent करूची because of the rotational effect of the earth Coriolis force as well. Now 7 number questions. Doldrum. Chalo. Question number 7. The term doldrum refers to what? The terms doldrum refers to what? चलो नेक्स्ट 7 डोलड्रम देख इजी क्वेश्चंस अच्छी भूल करिवो नहीं यस क्वेश्चन आसुची ए कहूची पीहू सस्मिता इज गोइंग फॉर सी दिवांशु इज गोइंग फॉर सी आईटीसी जेड सी कौन कहूचे एटा कौन ऑफ इक्वेटोरियल वीकेंड पैराफिन विंड सच वन हाई प्रेशर नॉट कंडीशंस सबपोलर स्लट काम कंडीशन इन चलो देखिबा महेश सतपथी इज गोइंग फॉर सी बहुत इजी तो इक्वेटर कौन इक्वेटर आम बे देखिले क्वेश्चन रे क्वेश्चन रे कौन कही से ये से ये जो 6 नंबर क्वेश्चन रे कौन कहला इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट थर्मली इंड्यूस्ड तो ये कौन हो दैट मीन्स इट वुड बी इक्वेटोरियल लो प्रेशर तो इक्वेटोरियल कौन लो प्रेशर इट वुड बी लो प्रेशर से कुछ काम कंडीशन इन सब भाई सबपोलार कथा किसी आम डोलड्रम कौटी देखा जाए इक्वेटर देखा जाए ऑलरेडी मुझे स्टार्टिंग रू तुमको देखी डोलड्रम इक्वेटर देखा जाए बोली डोलड्रम र मीनिंग कौन काम काम बस एटा इक्वेटर देखा जाए कौटी 0 to 5 0 to 5 बोथ द हेमिस्फीयर्स दैट मीन सॉरी इक्वेटर बोथ हम 0.5 0.5 तो मु जदी तुमको स्टार्टिंग रू देखैथिली एठी देखैथिली तुमको डोलड्रम्स एंड हियर इज डोलड्रम कहा जाए इक्वेटर लो प्रेशर को कौन कहा जाए डोलड्रम कहा जाए एठी देखैछि मु स्टार्टिंग रू राइट देन कंफ्यूजन सवर नहीं इट्स ए व्हाट दैट मीन्स हमें बोथ द लैटिट्यूड्स रे हमको देखा जो 0 to 5 0 to 5 देखा जो now comes to 8 number questions number 8 which of the following correctly explains why desert are common at 30-degree latitude आपर भी क्वेश्चन अच्छी एति कि नहीं आपर भी क्वेश्चंस अच्छी हां आपर भी क्वेश्चंस अच्छी एमते नहीं कि एति कि क्वेश्चंस आपर मध्ये क्वेश्चंस रहिछि चलो फिर नेक्स्ट वन खोजिबा आमर सेशन चली एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल्स मु काली टू स्टार्ट करूची लाइव सेशंस रहिबो आई होप दैट वुड बी यूजफुल फॉर एवरीवन तमनक पे काफी यूजफुल रहिबो राइट जॉइन दैट सेशन से सेशन तमनको काफी यूजफुल रहिबो सेशन तमनको काफी यूजफुल रहिबो मु कहली मो यूट्यूब रे 3 ରୁ 4 दिन ने राइट चलो फिर अब देखा ना विच ऑफ द इज करंटली एक्सप्लेन्स द डेजर्ट कहीं कॉमन होते 30-degree लैटिट्यूड्स रे देखो 30-degree लैटिट्यूड्स रे इथे भी फॉर्मेशन होता है देखिए बिकॉज दिस 30-degree लैटिट्यूड इज अ डायनामिकली फॉर्म्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड
high pressure belts. It's about dynamically induced high pressure जोटा मैं discuss करूँ the air will descend there. हमें बारंबार discuss करें here air will descend because of the ferrule. What sorry Hadley cell because of the what Hadley cells. And the air is descent because of the Hadley cell जो air descent करूँ air descendance means what atmospheric stability. Air ascent means what atmospheric instability. And that is why what adiabatic warm hobo adiabatically compressed hobo as the air is air जेतବେଳେ तळକୁ आसुची it would be adiabatically compressed and heat off adiabatically compressed और जेतବେଳେ air ascend करूची adiabatically expansion and cooling will happens expansion and cooling will happens and hence C is the correct answer. What C is the correct answer? हाँ किए तमनको भितर पचाउथले कि सर आपण कोन रेगुलर बेसिस रे क्लास करूछंती कुंतला बेहरा कहते सर आप रेगुलर बेसिस रे क्लास करूँ बिल्कुल रेगुलर बेसिस रे क्लासेस होची मु वीकली 3 to 4 days नौ बाकी टीचर माने मध्य नौचंती बट यू हैव टू फॉलो अस कंटिन्यूअसली चैनल को फॉलो करियर अछि एंड बिलीफ मध्य रखियर अछि सेल्फ बिलीफ सो दैट यू कैन हैव ओके चले फिर बाकी क्वेश्चंस को मिचिबा नाउ एडवांस एमसीक्यू किछि आसीबा में Now consider the following. Now कुछ advanced questions को हमें देखिबा. Subtropical high pressure belts are associated with anticyclonic circulations. Vertical air movement is dominant in the equatorial region and the polar pressure belt. Horizontal air mass is dominant in subpolar low pressure belt. These are quality of questions is here. Now you have to find. Try करो everyone. से कहूँ देख प्रथम कथा subtropical high pressure are associated with anticyclonic circulations. Vertical air movement is dominant in equator and polar high pressure. Okay. Then horizontal air movement dominates in subpolar low pressure. देखिबा एटा केते नंबर 9 number questions 8 number 9 number को आसो तम मनकर आंसर now comes to 9 number questions. Nine D Sasmita is going for D. Pihu कौची 2 and 3. चलो देखबे आंसर दिबांशु कौची A शिखा कौची A दीप्ति कौची A ओके चलो नाउ एबे देखिबा में आंसर वी विल नाउ ट्राई टू टिके कंफ्यूजिंग रही जिनस तो आम ताकू ट्राई करिबा सॉल्व करिया पई एटा होची तमर इक्वेटोरियल लो प्रेशर दिस इज सबपोलर हाई प्रेशर दिस इज सॉरी सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर एटा सबट्रॉपिकल subtropical high pressure, subpolar low pressure, this would be high pressure. अच्छा मते को high pressure हो बा low pressure हो ताले air एठी कोन करिवो air will be vertical. अच्छा एठी air कोन करूची एमती descend करूची vertical, एठी air will ascend like this, एठी air will descend like this, air will descend like this. ताले ए दीटा एरिया भीतर जो एरियाटा सेठी एयर गुडा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करिवो एयर विल बी हॉरिजॉन्टल हियर
एयर विल बी हॉरिजॉन्टल हियर तो एयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कोठी करिवो दीटा प्रेशर बेल्ट मझिरे जेमति कि वेस्टर्ली हियर वेस्टर्ली विल बी हॉरिजॉन्टल ईस्टर्ली विल बी हॉरिजॉन्टल किंतु ए पर्टिकुलर सबपोलार लो प्रेशर इट वुड बी वर्टिकल I means ताले से कुछ horizontal air mass move dominant in subpolar low pressure ना मतलब फॉर्मेशन है बट कौन सी भी लो प्रेशर हो बा हाई प्रेशर हो ध्यान से सुनिबो लो प्रेशर हो बा हाई प्रेशर हो एयर सब बेले वर्टिकल मूव करिवो लो प्रेशर हेले देख लेट्स से फॉर एग्जांपल्स मु कहूची एटा हला सरफेस एटा हला हमरो हाई प्रेशर एटा हला हमरो लो प्रेशर अच्छा जदि हाई प्रेशर हैला एयर विल डिसेंट लाइक दिस ताले वर्टिकल मूवमेंट जदि लो प्रेशर हैला एयर विल मूव लाइक दिस ये भी वर्टिकल से तो कहिछि से हमको कोन कहिछि देखो से एठी हमको कहिछि कंफ्यूज होबनी से कहिछि कोडे गला वर्टिकल एठी एठी देखो से एठी कहिछि वर्टिकल मूवमेंट से तो कहिनी के असेंडिंग डिसेंडिंग एक कथा कहिछि कि से मते से तो कहिनी से कहिछि वर्टिकल मूवमेंट एठी देखा जाए एठी देखा जाए ताले ए हाई प्रेशर हो कि लो प्रेशर वर्टिकल तो होची से कहिनी के वर्टिकली असेंडिंग वर्टिकली डिसेंडिंग से कथा तो से हमको कहिनी से कहछि वर्टिकल ताले इक्वेटर रे जदि मु देखिबी ताले इक्वेटर रे एयर कोन करछि असेंड करूछि पोलार रे एयर कोन करछि डिसेंड करूछि ताले वर्टिकल मूवमेंट तो होछि ना बोथ द रीजन राइट बोथ द रीजन रे कोन वर्टिकल मूवमेंट होछि सो दिस इज करेक्ट दैट मींस दिस इज करेक्ट तो 2 इज करेक्ट ना कम्स टू Now, से कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर सबपोलार लो प्रेशर देखो चाहे से लो प्रेशर हो बा हाई प्रेशर हो एयर सब बेले कौन वर्टिकल मूव करियो मु तुमको देखैली इन बिटवीन भाबो एटा हला तमरो लो प्रेशर आ ओटा हला हाई प्रेशर एटा हला हाई प्रेशर एटा हला लो प्रेशर ताले हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को जेतलो जीवो से हॉरिजॉन्टल मूव करिवो किंतु in and at but over the low pressure over the high pressure it would be vertical so that is why this would be cancelled this would be cancelled this will be cancelled this would be the correct answer so A will be the correct answer and this one is correct the high pressure belt associated high pressure अर्थात कौन high pressure अर्थात कौन atmospheric stability anticyclone रहिबो it would be what that means से कहिছে ना एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशंस ताले सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर एसोसिएटेड विथ एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशंस व्हाट से कहिছে सर्कुलेशंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंटीसाइक्लोनिक अर्थात अपोजिट टू द साइक्लोन हाई लो प्रेशर टा कोन एटा कोन साइक्लोनिक कंडीशन लो प्रेशर टा कोन साइक्लोनिक कंडीशन ताले हाई प्रेशर टा कोन एंटीसाइक्लोनिक ताले ये एंटीसाइक्लोनिक इक्वल टू कोन हाई प्रेशर जोडा एठी से कहिছি so that means A is correct तो ये टिके डिफिकल्ट थिला इजी नुह ये 9 नंबर क्वेश्चंस टेक्निकली डिफिकल्ट थिला थर्ड स्टेटमेंट देखो से कहिछि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखो जोठी लो प्रेशर थाए लो प्रेशर हो बा हाई प्रेशर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट काहे की हबो मु तो सही कथा तुमको बुझैली बुझुन बुझि परन तुम ध्यान से टिके देखो मो कहा था हाई प्रेशर हो बा लो प्रेशर हो तमे प्रेशर बेल्ट कौन सी गोटे मत कह अच्छा मत कह ये हाई प्रेशर अच्छी आउ गोटे जगह मु लिखिली लो प्रेशर लो प्रेशर मीन्स व्हाट एयर विल असेंड हाई प्रेशर मीन्स व्हाट एयर विल डिसेंड ताहले मते कह एटा कोन वर्टिकल नुह कि ये डिसेंड सिना करूची किंतु वर्टिकल एठी असेंड करूची किंतु वर्टिकल से तो कहिनी एठी के वर्टिक मतलब एटा कोन डिसेंडिंग एटा कोन असेंडिंग ताले एठी कोन असेंडिंग होची एठी कोन होची हमरो डिसेंडिंग होची किंतु से तो मते कहिनी असेंडिंग के डिसेंडिंग से कहछि हॉरिजॉन्टल कोन सी जगह रे हाई प्रेशर बा लो प्रेशर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होबनी दीटा भितर हाई कोन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हे थाए जेतोल हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट इज रॉन्ग नाउ कम्स टू 9 देख ये टिके ट्रिकी थिला मु तुमको बारंबार कहली ये क्वेश्चंस 90% पिला भूल करिवे जदि ये क्वेश्चंस को एग्जाम रे पचार दबो ना मोर देन 90% पिला को भूल करिवे कंफ्यूजन है कि भूल करिवे मु कहली एटा एंड दिस इज श्योर भूल करिवे तेनु एई भलिया क्लैरिटी ऑफ थॉट न रहले तमे ताकू करि परिबो नाही क्लैरिटी ऑफ थॉट दरकार 10 नंबर क्वेश्चंस
10 number. Which of the following pressure belt is least influenced by seasonal shifting? Seasonal shifting. Which of the following pressure belt is least influenced by seasonal shifting? Seasonal shifting द्वारा किए least influence? पोलार हाई प्रेशर बेल्ट के 10 नंबर क्वेश्चन आंसर किए दे शिखा देछि डी. ओके बाकी मैंने आंसर दे दियो. ना वन मोर क्वेश्चन जीव तापर हमर टाइम रन आउट हो सो आंसर वुड बी व्हाट डी. तो आंसर इज डी. एथि पई बिकॉज सन रो जो अपारेंट मूवमेंट कहा ऊपर बेसी इन्फ्लुएंस करे सबट्रॉपिक्स 30 डिग्री 30 डिग्री भाव मते गोटे कथा कहो सन रो अपारेंट मूवमेंट जो को एरिया रे बेसी इंपैक्ट पड़े ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटोरियल रीजन बट पोलर रीजन ऊपर बेसी किसी इंपैक्ट पड़े नहीं सो पोलर रीजन वुड बी मतलब मोर स्टैटिक. नाउ 11 नंबर क्वेश्चंस फटाफट मैच कर दियो. So with reference to the global atmospheric circulation which of the following pair is correctly matched? चलो देखो आंसर देखो 11. हाँ हाँ 11 नंबर फटाफट से 11 नंबर क्वेश्चंस. अरे मैच करो मैच करो मैच करो. इक्वेटर तुम इक्वेटर लो प्रेशर वेस्टर्ली कुआडे आसो आसो कि तो मैप तो तुम देखी थो समस्ते ये ना देखेबी मुझे तौक पुणी किए ये ड्र करदेवी फटाफट देख फटाफट. राइट हेगला तो ये थिला आज क्वेश्चंस बाकी किसी क्वेश्चंस अच्छी तार आंसर अच्छी तुम मैंने देखीदेव. तो ये थिला आज सेशन एमसीक्यू सेशंस आर पीडीएफ्स मु शेयर करदेवी मोर जो टेलीग्राम्स रही वेस मेंटर मोर टेलीग्राम चैनल रे मु शेयर करदेवी. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी एक्यू टेलीग्राम चैनल में तुमने पाइब. जदि कौन से एमसीक्यू मु शेयर करी नहीं जो वेस मेंटर मोर टेलीग्राम चैनल रे तुमने मते सेठी हैशटैग करके कि @ करके मते पचारि पारे मते टैग करके पचारदेव कि सर प्लीज शेयर दैट एमसीक्यू हमको डेट रो गोटे एमसीक्यू हमको दे दियंतु से टॉपिक रो ना आई विल डेफिनेटली. ओके चलो फिर तो आज सेशन को ये रखा. आपरे आस्क मी एनीथिंग सेशन मध्य रही. तो आस्क मी एनीथिंग सेशन रे मध्य मु 15 मु 8:15 आस्क मी एनीथिंग सेशन यूट्यूब रे पुणी लाइव रही तुम मान सहित जार जहाँ क्वेश्चंस अच्छी जहाँ भी प्रिपरेशंस को लेकिन आस्क मी एनीथिंग सेशन रही 8:15 रे मु पुणी लाइव आसबि यूट्यूब रे तुम मैंने जॉइन कर एंड शेयर कर राइट. सो विथ दिस ये रोचे 15 मिनिट गैप नौ देन सी यू अगेन्स 8:15 आस्क मी एनीथिंग सेशन यूट्यूब लाइव विथ यू. थैंक यू एवरीवन.